Hello guys, welcome back to my channel. First of all, I wish you all and your family a very happy Holi. I hope you all liked my previous video sharing experience on how I made the decision and fulfill the requirements to come to Canada. In this video, I'll continue my journey on my first few months in Canada and how I felt about this country overall. I will also talk about the things that I didn't really like about Canada as well as what Canada is very famous for. On the contrary, I will also talk about a few things what I didn't really like about Canada. So stay tuned guys and check out my video for you all. So as I told you all in my previous video that I arrived here on December 29, 2012 और कुछ घंटे बिताते ही I couldn't stop myself from appreciating Canada that it generally deserved. यहाँ की absolute सफाई, clean air, pure and fresh water and especially minimal to no noise pollution. इन सब चीज़ों ने एक तरह से मेरा दिल जीत लिया. Other than that, there were several other points that made this country one of the best choices I've ever made in my life. The first and foremost was free healthcare services. जी हाँ, Canada is one of the 43 countries in the world that is known to provide free healthcare to its residents, no matter what age group they belong to, as well as people coming from abroad. For example, international students, जो कि मैं था 8 साल पहले, and people coming on a work permit, and people coming here directly on a PR. यहाँ तक कि अगर आपको किसी कारण हॉस्पिटल जाना पड़ भी जाए, तो all you have to pay for is parking. Rest everything is taken care of by the Canadian government. You might not know, but USA में रहने वाले लोगों को free health services की accessibility नहीं है, which is why a lot of Americans are attracted to Canada every year. But yes, you also have to be careful here as only these few categories are eligible for free healthcare service in Canada. But if you're coming here as a tourist on a visitor visa or without any long-term status, but at the same time अगर आप फिर भी अपने आप को इंश्योर करना चाहते हैं, तो I would suggest you to first get a health insurance quote from a third-party insurance company before you plan to come to Canada. ऐसा करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है because you never know. टाइम का कुछ पता नहीं होता कब आपको कैसी इमरजेंसी फेस करनी पड़ जाए. कॉस्ट की बात करें तो इन थर्ड पार्टी हेल्थ इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता. If you Google, you'll find a lot of companies offering such insurances at very reasonable prices. For example, अगर आप कनाडा सिर्फ 15 दिन के लिए आ रहे हैं, you can get an emergency hospital and medical insurance for as low as 45 Canadian dollars. And you get a medical coverage of around $25,000 for any health related issue you might face when you're living in Canada. So it basically depends on how long you're going to stay in Canada, what age group you belong to, and if you currently have any underlying health conditions. For example, asthma, heart problem or any other serious health issue. मेरे पेरेंट्स भी आए थे 2019 में कनाडा विजिट करने एंड दे वर हियर फॉर अबाउट 2 months और उन दोनों का कुल मिला के अराउंड $350 इंश्योरेंस पड़ा, विच आई थिंक इज़ वेरी रीजनेबल गिवन देयर एज एंड द अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे स्पेंड इन कनाडा. फ़िलहाल कोविड के चलते प्रीमियम हल्का सा ज़्यादा हो सकता है, बट इट वोंट बी टू हाई. So your insurance premium basically depends on all these points and it might be more or less depending on these deciding factors. And I would say it again, आज COVID के time में it's very important to get yourself covered before you plan to go anywhere in the world, not only Canada. On top of that, Canada's response time to emergency calls is also considered to be one of the most brilliant and top notch in the world. And that is of around 8 minutes, which is a very, very good response time. And yes, it could vary more or less depending upon the road conditions and seriousness of the emergency, but it's still a very good response time. Okay, now another good thing about Canada is the people living in Canada. Yes, I'm saying it right. Canadian residents are among the top 10 countries and hold a rank for being the most humble and kind people on planet Earth. Because of this trait, Canada is considered to be one of the most friendliest places a person can be, no matter what his or her status in Canada is. मतलब कि आप यहाँ आते ही अपने बिहेवियर में ऑटोमेटिक चेंजेस देखना शुरू कर देते हैं. अगर आपके बिहेवियर में प्राइमरीली थोड़ी सी अनप्लेजेंटनेस है या रूडनेस है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ के लोगों से बात करके, उनसे मिल के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके यू स्टार्ट बिकमिंग जेंटलर एंड योर वे ऑफ प्रोसेसिंग और प्रेजेंटिंग योरसेल्फ टू अदर्स काइंड ऑफ स्टार्ट्स इम्प्रूविंग. एंड द थिंग दैट डिजर्व्स क्रेडिट आर द पीपल लिविंग इन दिस कंट्री. Well, clearly there could be some mean Canadians as well, but the number of nicest Canadians simply surpass the mean ones. और इसी के चलते a famous Spanish journalist and author went as far as saying that Canada is to niceness as Saudi Arabia is to oil. इतना ही नहीं, Canadians are considered so well mannered that even their arguments have been noticed to be more polite than normal.
Thirdly, something that also makes Canada a country to go to is, of course, as some of you might have already heard of, is Tim Hortons, a place to go to for all your coffee needs. Trust me when I say that. Coffee shops तो हर country में होती होंगी, but the kind of place that Tim Hortons holds in every Canadian's heart is a bit different. It is the second largest coffee chain in the world, just after Starbucks, which is why Canadians hold a special pride in it. Its double, ice cap, and French vanillas are some of the most liked items by the people living in Canada. सुबह की शुरुआत अगर इनकी कॉफ़ी से ना हो तो वो अच्छी शुरुआत नहीं मानी जाती। और टिम हॉर्टन्स ने अपनी इसी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स इन 10 अदर कंट्रीज़, ताकि बाहर रहने वाले लोगों को भी कनाडा के कल्चर का टेस्ट लेने का मौका मिल सके। और हाँ, कैनेडियन ड्रिंक की बात चल रही है तो हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द कैनेडियन फूड, विच इज़ एवरीबडीज़ ऑल टाइम फेवरेट, poutine. It is nothing but just a tasty blend of French fries mixed with lots of cheese and gravy. It was initially invented in 1957 in a French restaurant in the province of Quebec, जब एक कस्टमर ने सिंपली फ्रेंच फ्राइज में चीज़ ऐड करने की डिमांड की, और तब जन्म हुआ poutine का, which is still every Canadian's most favorite main dish or side dish. हाँ, हम लोग अपने खाने में थोड़ा स्पाइस पसंद करते हैं और ये इतनी स्पाइसी नहीं होती, बट फिर भी once you tried, you never go back. टिल नाउ मेरा वीक में 2-3 बार ऑफिस लंच poutine से ही हो जाता है। और खाने पीने की बात चल ही रही है तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू लेट यू नो कि कैनेडा इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलरली नोन फॉर इट्स मेपल सिरप। इट्स अ सिरप मेड फ्रॉम द सैपल ऑफ मेपल ट्रीज़, या आप कह सकते हैं जो मेपल ट्रीज़ का रस होता है तो ये उसमें से निकलता है। दीज ट्रीज़ आर फाउंड इन अबंडेंस इन कैनेडा। इनफैक्ट कैनेडा अकाउंट्स फॉर अबाउट 85% ऑफ ऑल द मेपल सिरप प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, कैनेडा के फ्लैग में ही मेपल लीफ का सिंबल है तो ऐसा तो होगा ही। Fourth, what makes Canada unique and better than any other country is free education. As we all know, everybody must have access to quality education, and this concern, without any doubt, is taken very seriously by the government of Canada. Here, all the children who are citizens or have a permanent status in Canada have access to free education. Yes, यहाँ पे भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, बट अनलाइक US, you don't see a very big difference in the private and public schools. In fact, everybody just simply calls it school. Of course, every province have a different curriculum, but it doesn't vary a lot. On the other hand, अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टडीज़ की बात करें तो it's also not that expensive. For citizens or permanent residents, the cost comes up to be around 6,400 Canadian dollars for 1 year for undergraduate degree and around $7,000 per year for the graduate degree program, which I don't think is a lot if you go for a normal 2-year program. तो ये सब देखते I kind of felt कि भाई शायद मेरा कनाडा आने का डिसीजन सही साबित हुआ, but there were a couple things that I didn't like much about this country as well, which I will cover in the later part of this video. पहली तो थी ठंड। आपने कुल्लू मनाली, दार्जिलिंग और पटनी टॉप जैसी प्लेसेस की ठंड और स्नोफॉल तो देखी होगी, लेकिन कभी वहाँ पे परमानेंट नहीं रहे होगे, राइट? इमेजिन आपको ऐसी ही जगह पे पूरी विंटर निकालनी पड़े तो कैसा फील करेंगे आप? बस कुछ ऐसा ही कनाडा है, जहाँ साल के 8-9 महीने तो सिर्फ स्नो और ढेर सारी थंडर स्टॉर्म्स में ही निकल जाते हैं। बेसिकली द मोर यू गो फार अप नॉर्थ, द मोर स्नो यू गेट टू सी अलॉन्ग विद कंटिन्यूसली ड्रॉपिंग टेम्परेचर्स। अगर हम कंपेयर करें तो टोरंटो हैज़ फार लेस स्नो देन एनी अदर पार्ट ऑफ द प्रोविंस बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड वेरी क्लोज टू द बॉर्डर्स ऑफ USA एंड ऑल्सो वे डाउन साउथ। But as you go up north to other provinces like Quebec or Newfoundland or Yukon or Nunavut, you get a chance to see some of the coldest and chilling winters on planet Earth. This is why a very large number of Canada's population lives in the southern region of Canada. But कहने को वहाँ की ठंड भी comparatively कम नहीं होती, और ठंड भी एक बहुत बड़ा रीज़न है why Canada's population is so low as compared to its neighbor the USA. तो अगर आप एक विंटर लविंग पर्सन है या फिर यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ स्नो तो कनाडा इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू लिव। लेकिन अगर आप फिर भी कनाडा आना चाहते हैं बट यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द विंटर सीजन तो आइदर यू शुड ट्राई कमिंग ओवर इन द समर सीजन और ट्राई विजिटिंग द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। Yes, this province receives the least amount of snow in whole Canada, especially Victoria, जहाँ it's very little to no snow at all और temperatures भी ज़्यादा low नहीं जाता। Secondly, something that I didn't like in Canada is the taxes. Yes, यहाँ पे आपको टूथब्रश से लेकर घर की परचेज हर चीज़ पर टैक्स पे करना पड़ता है। And it doesn't matter either you're purchasing items through cash or your debit or credit card, you have to pay tax. Every province has their own tax percentage that the government applies to all the items that is sold or purchased in that province, and the lowest of them all is in the province of Alberta. That is only 5%.
as compared to 13% in Toronto, Ontario. तो इस मामले में I didn't like that people living in Alberta are so well off paying low taxes as compared to what I pay in Toronto, that is 13%. तो it seems kind of unfair to me. लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो टोरंटो इज़ द लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी इन कनाडा, तो जाहिर है टैक्सेस और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होंगे। एंड आई लव टोरंटो एंड आई नेवर वांट टू लीव दिस प्रोविंस, तो इससे खुद ही डील करना पड़ता है। और साथ ही साथ मैं इस बारे में भी बात करना चाहूँगा कि अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो दीज टैक्सेस आर अ वे हाउ द कैनेडियन गवर्नमेंट इज़ एबल टू प्रोवाइड एंड सर्व इट्स रेजिडेंट्स विद द हेल्थ एंड टॉप रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज, विच आई थिंक इज़ रीजनेबल इनफ। आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी फ्री हेल्थ केयर की बात कर रहा था, बट अब आई एम सेइंग कि कैनेडियंस पे फॉर दीज सर्विसेज। तो रियलिटी ये है कि वी डू पे, बट इनडायरेक्टली when taxes are deducted out of our income. Basically, any person earning an average annual income of 42,000 Canadian dollars ends up paying around $4,300 of his income for the public healthcare insurance, whereas a family of 2 adults with their 2 children earning an average of more than 100,000 Canadian dollars ends up paying for around $11,000 for these services. हाँ, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी भी टाइम इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ भी जाए तो there you are not asked to pay even a single penny, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट। तो घुमा फिरा के इट्स बोथ वेज, यू आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न फॉर व्हाट यू हैव ऑलरेडी पेड फॉर बिफोर। थर्डली, मैंने जब कॉस्ट ऑफ स्टडीज़ की बात करी थी एडवांटेजेस में, तो कहा था कि कॉलेज एजुकेशन इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव फॉर द सिटीजन्स एंड परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कैनेडा, बट दिस थिंग टर्न्स आउट टू बी वेरी डिफरेंट एंड disheartening for the international students who specifically come to Canada for study purposes. Basically, in 2020, an international student has ended up paying around 18,000 Canadian dollars for a 1-year undergraduate course. ये अमाउंट अगर हम $6,000 से कंपेयर करें जो एक डोमेस्टिक स्टूडेंट पे करता है फॉर द सेम कोर्स, तो यू कैन टेल हाउ बिग द डिफरेंस इज। बैक इन 2013 when I was an international college student, I paid around 12,000 Canadian dollars per year for my diploma in business accounting, जो कि बनता है around 24,000 Canadian dollars for my 2-year program. Us time the difference was 2 times of what a domestic student used to pay, but today this difference has become around 3 times. So if you're specifically thinking of coming to Canada only for studies, so you have to be prepared to shell out a very large amount of money out of your pocket. And these expensive that I talked about is just for a basic course. Engineering, medical and dentistry are even more expensive than any generic courses available in Canada. So guys, this was my video on a few comparisons about the things that I liked in Canada and the things that I didn't. Hope you all liked it, and I will definitely make a couple more videos in future covering more pros and cons of living in Canada. And please don't forget to subscribe to my channel. This will give me lots of strength and motivation, and I'll continue making tons of quality and informative videos for you guys and be helpful to you all in some way. Until then, take care, stay safe and be happy guys. Thank you so much all. Bye-bye.